function generator IC, it will be required to generate, basically 3 types of functions. Sinusoidal, then sorry, this should be triangular. Triangular waveform, and third one is going to be the स्क्वायर वेव वेवफॉर्म, राइट। और इन तीनों में जैसे साइन जो फंक्शन जनरेटर है, that should have the provision of varying the amplitude and also the frequency. Here you should have provision of varying the amplitude, frequency, and also the symmetry. Symmetry means in triangular wave, whether you want both rise and fall time equal, or you want rise and fall time different. This is what I mean by symmetry, which I have already discussed. So all these possibilities should be available in the triangular waveform generation, correct? Then third one is a square wave generator. Again, it should have the provision for varying amplitude, the varying frequency, and also a very important, this thing is the duty cycle. So a function generator IC is used to actually create a device which is called function generator, and a function generator generates all these 3 types of functions, right, with these features, correct? Okay, so उसमें होगा क्या, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ लिखा है उस सीक्वेंस में जनरेट नहीं होती ये चीज़ें. The first waveform which is generated is normally the square wave. Then square wave is converted into triangular wave, and then triangular wave is converted into the sinusoidal wave, right? So square wave generation आपको पहले ही बताया जा चुका है, how it can be generated. In IC, what you have basically that there are 2 types of current sources, the positive going and the negative going, right? And that is what generates the RAM, correct? So there will be a positive going current, right? And there will be a negative going RAM. And this is what is to be connected to a capacitor. Right, so here you have a switch. Here you have a switch which can be switched between position 1 and 2, position 1 and position 2. Accordingly, the capacitor, if it is in position 1, it will charge like this in this polarity. If it is position 2, then it would charge like this with this polarity, right? Now this voltage is actually what is going to be the ramp voltage, constant current, let us say I1 and I2, depending upon the symmetry that we want. If I1 is greater than I2, then you have the faster charge, right? If I2 greater than I1, then you have the
uh, faster discharge, right? Faster charge means the red arrow. Faster discharge means the green arrow. Correct. Now then you have here a comparator, right? Or comparator is now actually output of this comparator is what is governing this switch. ये जो switch है, इस switch का on off होना या position 1 और position 2 का control जो है, it is governed by this thing, right? And the voltage across capacitor, which is actually VCT, will be ramp. Voltage at the output of comparator. So there are obviously two types of voltages already generated. एक यहाँ पर जो voltage होगी कंपैरेटर के आउटपुट पे, ये एक्चुअली स्क्वायर वेव होगी of different duty cycle depending upon the type of symmetry that we have chosen. I1 और I2 से हम symmetry तय करते हैं, ठीक है? And then accordingly you have ramp generators here across the capacitor. So maybe this type or maybe the other symmetry, which is this type. Correct? तो दो तरह की waveform generate हो गई. One waveform square wave, other waveform which we have here, this one is the triangular wave of different symmetry. और इनकी frequency control हो रही है I1 और I2 से. I1 and I2, they are controlling the frequency. Now what happens, this you can have another block which converts triangular wave into ये जो इसमें इनपुट दे देते हैं. So this is triangular to sine converter, right? So here you will get the triangular wave converted into sine wave, right? Now all these three waveforms are generated. Then these three waveforms can then be, so you have the three waveforms, triangular, right? This and the sine wave. Now here you can have another switch which is called the function selector switch. It has three positions, right? और ये तीनों position ऐसे हैं. When this is in position 1, you will get triangular wave. If it is in position 2, you will get square wave. Position 3 gives you sine wave. Now this output is then connected to a power amplifier. And finally, this is where we give the output. This is where we give the, ये finally output हम लोड को दे देते हैं. ठीक है? अगर प्रैक्टिकल सर्किट आप विजुअलाइज करना चाहो तो the OTA and op-amp circuit which we drew earlier, let me redraw that will give you a quick idea. Okay, so here you have OTA. ये कांस्टेंट करंट जनरेट करता है प्लस IB या माइनस IB टाइप का. ठीक है. Then here you have the Schmitt trigger.
and then this output is given to, ठीक है, and this output goes to here I can have a bank of capacitors of different values, ठीक है ना, कई हो सकते हैं, it is not only one, and then here I can have a switch, then I have this, then this, and maybe the third switch here, ठीक है. Okay, so R1, R2, then you can write here C1, C2, C3. Drastically different values हैं, जिससे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग रैंप का जो स्लोप है वो चेंज होगा, राइट. एंड यहाँ से या तो प्लस आई बी फ्लो करेगी या माइनस आई बी फ्लो करेगी, प्लस माइनस आई बी. और प्लस माइनस आई बी ये वो है जो हम यहाँ पर बायस करंट दे रहे हैं, आई बी. So here you have this IB, or here you have this IB. Accordingly, you have the positive voltage like this, or maybe positive voltage like this, right? So now you have got this switch, this switch here, this called frequency range selector. If I name it as SW1, this is frequency range selector. Range selector. और ये जो IB अगर हम वेरी करें, if I vary IB वेरिएशन, ये फ्रीक्वेंसी फाइन वेरिएशन, फाइन वेरिएशन के लिए, रेंज वेरिएशन के लिए ये हो गया, फाइन वेरिएशन के लिए ये हो. सपोज you have chosen a range, C1 is a range from, let us say, 10 hertz to 1 kilohertz. तो रेंज तो C1 से तय हो गया. अब इस 10 to 1 kilohertz में फाइन वेरिएशन वो IB से तय होगा. Then this one is for, let us say, 1K to 100K. This is range selection. और उसमें 1K और 100 के बीच में कैसे वेरिएशन होगा वो IB तय करेगा. Correct? Likewise, C3. You can have several ranges, right? Depending upon the type of oscillator that you have. And the voltage across this point, ये जो यहाँ पर है, this is actually VCT. And VCT is without doubt, it is the triangular wave generator. Then voltage at this point, VOT, is without doubt the square wave generator. अब इस ट्रायंगुलर वेव जनरेटर है, यहाँ का आउटपुट हमने यहाँ से टैप करके ले लिया और इसको मैंने फिर पास किया एक रैंप टू और ट्रायंगुलर टू साइन वेव कन्वर्टर, और यहाँ पर हमें फिर मिल गई साइन वेव. सो हियर यू गॉट साइन वेव. इंसिडेंटली इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी.
क्या लेना है ये आपको तय करना है. So as I told you in previous slide, you can pass these three waveforms through a power amplifier, and then you can get here output, final output. अगर ये switch 1 पर है तो you get triangular wave. अगर ये switch 2 पर है you will get square wave. Switch अगर 3 पे है you get sine wave. Right? So that's the function generator. Function generator IC 8038 है. Right? उसमें ऐसा ही कुछ ब्लॉक होता है जो इसके पहले वाला मैंने ये बना के बताया कि दो टाइप के करंट सोर्सेज होते हैं. और आप अगर ध्यान से देखो तो ओटीए में वही दो तरह के करंट सोर्स बन रहे हैं, इधर आउटवर्ड करंट आईबी और इनवर्ड करंट आईबी, डिपेंडिंग अपॉन दिस आउटपुट. इफ इट इज प्लस then it is outward IV. If it is minus, then it is inward IV. Is that okay? Is that clear to you? Yes, sir. Right. So that was the function generator. Now let me आप phase locked loop अपने आप पढ़ लेंगे. After having studied so much of non-linear and linear applications of different type, you can on your own study that. That's not a big problem. Let me quickly move over to the feedback. Feedback amplifier, right? So what happens in feedback amplifier, we have a normal amplifier, and output of this amplifier is given to a feedback. This is amplifier. So fraction of this output is given to the input of a network, which is called the feedback network. Feedback network, and output of feedback network this output is now mixed with the input. In this way. So this is the feedback voltage, and that's the input voltage. Here you have or let me put it this way. Here this is, let us say, the signal, and this is the input to the amplifier. Here you have VO. Correct? So that becomes the feedback amplifier. Now this feedback will be of two types. When right now what you see that VI, the input to the amplifier, is actually the signal minus the feedback signal, right? So if this is the situation, it is called negative feedback amplifier. Negative feedback amplifier. That the feedback signal is VF is appearing in the opposite phase to that of the signal VS. So this is a negative feedback amplifier. If VI, on the other hand, if it is, say, VS plus VF, then that situation will be called the positive feedback. Positive feedback. So accordingly, there are two types of feedback amplifiers, the positive feedback amplifier and negative feedback amplifier. The positive feedback amplifier is only reserved for situations when we want to realize oscillator, right? So positive feedback is exclusively for realizing oscillators, to be specific, sinusoidal oscillators. Right? Here what happens that the signal and the feedback signal both are in the same phase, therefore they get added as and they appear
in the added form to the input of the amplifier, right? Negative feedback amplifier is only used in the amplifiers. Obviously, feedback amplifiers have some advantages over the conventional amplifier. This is what is conventional amplifier. It doesn't have any feedback. But what you see here right now, that this is another amplifier, the green boundary, right? Which has the input here and it has the output here. This is the feedback amplifier. Correct? There is an amplifier without feedback. Which amplifier is without feedback? Amplifier within this red boundary is amplifier without feedback. And when output of this amplifier is fed to the feedback network and then it is mixed with the input signal, then it becomes the feedback amplifier. Correct? Is it okay? Is it okay? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. So is that okay? Is that clear to you? Yes, sir. So there are places, there are two important, in fact, in feedback amplifier, there are four important ingredients. What are those four things? First one is that it has an amplifier. Second, that it has a feedback network. Third, it has a take-off point, जहाँ से हम आउटपुट को ले करके और फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में देते हैं. Fourth is a mixing point where I am mixing the signal with the feedback signal, right? So these are the four things. One, amplifier without feedback. Two, feedback network. Three, the point from where we take out the output, and four is the mixing point, right? So इस तरह से ये चार चीजें हैं इसमें, and obviously the 3 and 4 will be of different type depending upon the type of amplifier that we have. Let us see the first of all the type of takeoff and type of the mixing. Okay, so I will take the case of the voltage amplifier first. So first thing, I have the basic amplifier without feedback. This is the case of voltage amplifier. So it has voltage input, it has voltage output, right? This is voltage amplifier. Okay, then I need a feedback network जिसमें कि इनपुट हम वोल्टेज देंगे और इसका आउटपुट भी वोल्टेज होगा. ठीक है, अब इसमें इनपुट जो लेंगे वो कहां से लेंगे? This will be taken from the output of the amplifier. So what I'm going to do, I'm going to यहां से आउटपुट लेकर के हमने यहां दे दिया और ऐसे ही यहां से आउटपुट लेकर के हमने यहां दे दिया. So this is the output. इस आउटपुट को हमने यहां से लेकर के इसमें दे दिया इनपुट. इज दैट क्लियर? पैरेलल में लगा दिया. फीडबैक नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट पे पैरेलल में लगा दिया, शंट कनेक्शन कर दिया. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Now I have to mix
अब यहां पर एक इनपुट सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल, इसमें मिक्स करना है। यहां पर वोल्टेज जो है VI है, यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है, फीडबैक वोल्टेज है। VF को VS में मिक्स करना है, कैसे मिक्स करेंगे? Can we do like this? Now here you have this and this, VF. Here you have VS. What is VI right now? If you apply the loop KVL at the input, VI will be VS minus VS VF. minus VF. Right. So this is called the mixing. अब आप ध्यान से देखो इन दो चीजों को, ये जो मिक्सिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड सीरीज मिक्सिंग। मिक्सिंग इज कॉल्ड, दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड सीरीज मिक्सिंग। आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज मिक्सिंग। और ये यहां से जो ले रहे हैं, ये किस तरह से ले रहे हैं, शंट में ले रहे हैं, शंट टेक ऑफ। ठीक है, तो ये जो फीडबैक है वोल्टेज एम्पलीफायर का, दिस इज कॉल्ड सीरीज शंट फीडबैक। पहले क्योंकि सीरीज है, बाद में शंट है, तो इसका नाम ही है इस तरह का। द नेम ऑफ दिस फीडबैक इज कॉल्ड सीरीज shunt feedback. Is that okay? Is that okay? This is called series shunt feedback. एक दूसरा नाम भी इसका है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। हम क्या कर रहे हैं, यहां का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, और इस वोल्टेज को ले करके हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इनपुट की सीरीज में फीड कर रहे हैं। इज दैट राइट? आउटपुट की वोल्टेज ली हमने, फीडबैक नेटवर्क को दिया, और जो भी एक फीडबैक वोल्टेज है उसको हमने इनपुट की सीरीज में मिला करके फीडबैक कर दिया। तो दूसरा नाम इसका हो गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक। इज दैट ओके? इज दैट राइट? Yes, sir. तो ये जो सिचुएशन है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए है। in voltage amplifier what will happen, in voltage amplifier we will see input as voltage, output is also as voltage, and therefore what processes should we follow, output voltage को हम एक फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में देंगे, और यहाँ से जो फीडबैक वोल्टेज है उसको ले करके हम इनपुट में मिक्स करेंगे सीरीज में सिग्नल के, and this is called the voltage feedback amplifier. Now depending upon the polarity of VF की पोलरिटी इस समय जैसी दिख रही है वो नेगेटिव फीडबैक की है। ऐसा पॉसिबल है कि आप ये पोलरिटी इस तरह की बना दो, वॉयलेट जो मैं लिख रहा हूं VF, then it will be positive feedback. करेक्ट? सो वोल्टेज एम्पलीफायर में जो फीडबैक है उसे हम बोलेंगे सीरीज शंट फीडबैक या वोल्टेज सीरीज फीडबैक। दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, राइट? Now let us see the case of current amplifier. In current amplifier we have input is current, this input is IS, output is also current,
देन वी हैव अ फीडबैक नेटवर्क। अब फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में हम क्या डालेंगे? ऑब्वियसली ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट यहां किसी लोड को जाना होगा, ठीक है ना? अब ये लोड जो है ये कैसे लगेगा? एनी आइडिया? लोड किस तरह लगेगा? पहले वाले को ले लो। लोड हो जैसे यहां लगाना हो, सॉरी, अगर यहां लोड लगाना हो तो हम क्या करेंगे? सीधे इसके शंट में लगा देंगे यहां पर। एनी डाउट? यहां हम सीधे लोड लगा देंगे। इस केस में लोड लगाना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले लोड ले तो लो, ये लोड ले लिया। अब आपको आउटपुट की करंट को सैंपल भी करना है। आउटपुट की करंट हम क्या करेंगे? ऐसे देंगे इसमें। एनी डाउट? What we are doing, we are taking this output current, giving it to the input of the feedback network. So this is now IO, output current, given to the feedback network. और इसका जो जहां पर जो करंट मिलेगी, अब हमें इनपुट इसमें देना है क्या? II, इनपुट करंट II। मिक्स करना है। सो एक यहां लग गया, एक यहां लग गया। नाउ दिस करंट इज IA, दिस करंट II। यहां से करंट हमने ले ली IF, तो IF is this. Is that right? So what we are doing, आप मिक्सिंग देखो कैसे कर रहे हैं और टेक ऑफ कैसे कर रहे हैं। टेक ऑफ इज सीरीज। टेक ऑफ किस टाइप का है? यहां जो लिया जा रहा है वो सीरीज में लिया जा रहा है। और मिक्स कैसे कर रहे हैं हम इसको? मिक्सिंग कैसे कर रहे हैं? शंट में। सो दिस विल बी कॉल्ड शंट सीरीज फीडबैक। शंट सीरीज फीडबैक। तो ये करंट एम्पलीफायर है। दिस इज करंट एम्पलीफायर। दिस वन इज विदाउट फीडबैक। ये जो अंदर दिख रहा है दिस इज विदाउट फीडबैक। और अब फीडबैक के बाद जो एम्पलीफायर बन रहा है वो ये बन रहा है डॉटेड रेड बाउंड्री। दिस इज विद फीडबैक विच इज शंट सीरीज फीडबैक। और शंट सीरीज फीडबैक का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोलो। आउटपुट की करंट हम यहां से ले रहे हैं, करंट, और इस करंट को हमने इनपुट में दिया फीडबैक नेटवर्क के। और ये जो आउटपुट करंट है ये हमने कहां पर मिक्स किया? यहां पर। किस तरह मिक्स किया? शंट में मिक्स किया। तो दूसरा नाम हो सकता है करंट शंट फीडबैक। दूसरा नाम हो जाएगा करंट शंट फीडबैक।
एक नाम हो गया शंट सीरीज फीडबैक, दूसरा हो गया करंट शंट फीडबैक, एंड दिस इज कॉल्ड करंट एम्पलीफायर। तो अगर करंट एम्पलीफायर है तो इसमें जो 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 फीडबैक की जो टोपोलॉजी होगी वो इस टाइप की होगी। शंट सीरीज फीडबैक होगा अरेंजमेंट, या इसका दूसरा नाम है करंट शंट फीडबैक। इज इट राइट? इनपुट इज करंट, आउटपुट इज ऑल्सो करंट, जो यहां से करंट जा रही है आईओ वो भी करंट है, करंट एम्पलीफायर। एनी डाउट? No, sir. Okay. Now, when you have input is voltage, output is current, then this will be called transconductance amplifier. Input is voltage, output is current. इनपुट हमने वोल्टेज दिया VI, आउटपुट क्या लिया हमने? करंट लिया। अब ये करंट किससे फ्लो करेगी? एक लोड से फ्लो करेगी। करंट ऐसे गई और इस करंट को आपको अब देना है फीडबैक नेटवर्क में। राइट? और आउटपुट हमें क्या बनाना है? वोल्टेज बनाना है। इस वोल्टेज को इनपुट में मिक्स करना है। सो इनपुट पे हमने दिया है वोल्टेज, राइट? यहां पर हमने लिया है ये फीडबैक वोल्टेज। नाउ VI इज VS minus VF. Output is a current. IO, current, current, current. Is that correct? Is that correct? Yes, sir. So this is now transconductance amplifier. That input is VI, output is IO, right? अब ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर में जो ये नेटवर्क होगा, फीडबैक नेटवर्क होगा, फीडबैक नेटवर्क होगा, इसमें इनपुट क्या होगी? करंट होगी। इनपुट विल बी करंट I नॉट, आउटपुट क्या होगी? वोल्टेज VF। और एम्पलीफायर जो बेसिक एम्पलीफायर है उसमें इनपुट क्या होगी? इनपुट होगी वोल्टेज, आउटपुट क्या होगी? करंट, राइट? और जो जो एम्पलीफायर जो इफेक्टिव एम्पलीफायर है उसमें क्या होगी? इनपुट इज वोल्टेज, आउटपुट इज करंट। किस टाइप का अरेंजमेंट है आप देखिए गौर से। आउटपुट पे सीरीज मिक्सिंग हो रही है, इनपुट पे सॉरी आउटपुट पे सीरीज पे टेक ऑफ किया जा रहा है, इनपुट पे सीरीज मिक्सिंग हो रही है। तो दिस कॉल्ड सीरीज फीडबैक। सीरीज फीडबैक। और दूसरा नाम क्या होगा? कैन यू गेस? Transconductance series feedback. नो, करंट। आउटपुट की करंट लेकर के और हमने इनपुट में दिया, ये वोल्टेज बन गई। सो करंट सीरीज फीडबैक, दूसरा नाम ये होगा। करंट सीरीज फीडबैक, सीरीज फीडबैक और करंट सीरीज फीडबैक। चौथा आप गेस कर सकते हो क्या होगा? ये तो ट्रांसकंडक्टेंस से, चौथा क्या होगा? ट्रांस इंपीडेंस एम्पलीफायर, where input is current, output is voltage. Input is current, output is a voltage. अब ये वोल्टेज हम इसमें इनपुट में देंगे एम्पलीफायर के।
और यहां पर हम एक करंट जनरेट करेंगे जो इसमें मिक्स की जाएगी। सो इनपुट पे करंट सोर्स है IS, then we are mixing IS, IF, IF, II, IF. Here input is V naught, V naught. करेक्ट। अब देखो दोनों किस तरह का है, टेक ऑफ और मिक्सिंग दोनों ही शंट शंट है। इज इट राइट? So it is Yes, sir. called shunt shunt, shunt shunt feedback. या और क्या कह सकते, दूसरा नाम क्या होगा इसका? यहां से क्या लिया? वोल्टेज। कैसे मिक्स किया इसको? शंट में, तो नाम क्या हो जाएगा? वोल्टेज शंट फीडबैक। Voltage shunt feedback, either this name or this name. Is that right? ये Yes, जो sir. बेसिक एम्पलीफायर ये हो गया ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर भी हो गया ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर। Right? Okay. Next one is let us quickly analyze the basic. So you have this kind of feedback arrangement. अब मैं ये नहीं दिखा रहा हूं किस टाइप का। ये टेक ऑफ कैन बी सीरीज, मिक्सिंग कैन बी सीरीज और शंट। टेक ऑफ कैन बी सीरीज एंड शंट. Let us say this is voltage Vs, this is voltage Vf, this one is Vi, this one is V naught, therefore this is also V naught, right? Here you have the voltage gain A, here you have feedback ratio beta. So A will be how much? A will be V naught by Vi. Beta will be how much? Vf over Vo. Is that correct? Yes, sir. Okay. Having noted this, you can also write that Vi is Vs minus Vf. एक ये भी चीज नोट करो, if this is plus and this is minus, negative feedback के लिए बात हो रही है। Plus सर हम and A को VS के फॉर्म में लिख देंगे। exactly. तो अब आप, I want to find out, my target is find out now Vo by Vs. Vo by Vs निकालना है in terms of A and beta. सर VI को सर A वाली इक्वेशन में डाल देंगे VS माइनस VS। So निकाल के बताओ क्या होगा। ये जो तीन इक्वेशन है इन तीनों का यूज करना है, 1 2 3, और फाइंड आउट Vo by Vs in terms of A and beta.
So what are you getting? Sir, 1 plus A beta, 1 plus A beta by A. No, no, no. ये होगा A by 1 plus A beta, Yes, sir. right? A by 1 plus A beta. A is the amplifier gain, beta is the feedback ratio, right? And the gain of the amplifier with feedback, इसको हम denote करेंगे A suffix F, right? So A suffix F is A by 1 plus A beta, where A is the gain of the amplifier without feedback, beta is the feedback ratio, right? So gain with feedback AF will be equal to A by 1 plus A beta. Is that okay? Now let me discuss with you few more things. हमने Sir, अभी 11 o'clock से class और 12 o'clock से class है. okay, okay. So you can quickly mark your attendance. Thanks for reminding.